A very good morning, class. Today we are going to complete the reading of the chapter Light. So, Pratik, start. Yes, Pratik, ma'am. please Yes, start. ma'am. Refraction. What happens when light passes through a transparent glass sheet? Why can we see an object which is kept on the other side of the glass sheet pane clearly? This is because there is no change in the quantity of light when it passes through transparent mediums like glass and air. This phenomenon of light, in which it passes from one medium to another, is known as refraction. Transparent So, material please act mark the यहाँ से इसके आगे this phenomena of light in which it passes from one medium to another is known as refraction. मार्क करो और उसके बाद वाली लाइन को मार्क कर लो. Fill in the blanks के लिए बन सकता है. ठीक? Is it clear? yes, ma'am. Mark? Okay, then read. Transparent materials act as refracting surfaces. Like reflection, refraction is also an important phenomenon of light. You may have seen lenses used in spectacles, magnifying glasses, etc. Lenses are spherical refracting surfaces made up of transparent material, glass or plastic. Like spherical mirrors, lenses are also of two types, concave and convex. अच्छा Con- क्लास, एक मिनट मेरी बात सुनो. इन फिगर्स को प्रैक्टिस करिएगा. कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की जो फिगर्स दिए गए हैं दिख रहा है, yes, ma'am. और ये कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के भी दिए गए हैं. दिख रहा है लेंस में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रैक्टिस करिएगा. मैंने भी आपको दिया है, आपको एग्जाम में क्लास में होमवर्क में भी दिया था, याद है, बनाने के लिए डिफरेंसेस लिखते हुए. यस और नो? Yes, yes, ma'am. इनकी प्रैक्टिस करिएगा. आगे पढ़ो. Convex lens. This lens is thick or bulging at the middle and thin or tapering at the edges. Convex lenses are also known as converging lenses. Concave lens. This lens is thin at the middle and thicker at the edges. Concave lenses are also known as diverging lenses. तो अगर आपको ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंसेस लिखना है, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस लिखना है, तो कौन सा फिगर बनाओगे? कौन सा फिगर बनाओगे? बोलो, कौन सा फिगर Ma'am, this बनाओगे? आपकी बुक में है, कौन सा है? ये जो दो फिगर्स आपको दिख रहे हैं लेंस के येलो कलर में, Yes, ma'am. ये फिगर्स आपको बनाना है विद सपोर्ट ऑफ योर आंसर. ओके Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट थिंग रीड करो. Image formation. ओके, ईशा रीड करो. आ गई ईशा? ईशा आई है? Yes, ma'am. Ma'am, ईशा, हाँ बेटा, एक मिनट. ma'am, these diagrams will be made in differentiate if it comes in exam, right? If it's come as exam, you have to make it. But अगर converging lens define करने को कहा गया तो भी आपको ये diverging converging lens वाला diagram बनाना पड़ेगा. And ma'am, मतलब on कहीं page number. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके एग्जाम में कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि अगर ड्रॉ द डायग्राम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो बात अलग है, नहीं तो कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि ड्रॉ अ डायग्राम विद सपोर्ट ऑफ योर आंसर. मेरी बात समझ में आई? Yes, ma'am. आपके पेपर में कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि ड्रॉ डायग्राम विद सपोर्ट ऑफ योर आंसर. मतलब आपको अपने आप से डायग्राम बनाना ही बनाना है, अगर और डायग्राम के मार्क्स इंक्लूडेड हैं. मेरी बात समझ में आई? इज इट Yes, क्रिस्टल क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर? Yes, ma'am. ओके, yes, ma'am. आगे पढ़िए. Image formation in a convex lens. A convex lens is called so as in this lens all the rays meet at a point. Let us explore how and what type of image is formed by a convex lens through तो an ये वाली activity. एक्टिविटी आपके कोर्स में नहीं है, आपको पहले से पता है. एक्टिविटी कोर्स में नहीं, लेकिन एक्टिविटी के रिजल्ट्स कोर्स में है. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो एक्टिविटी क्या रिजल्ट निकले? हाँ बोलो. Thus we can conclude the following about the nature of image. As the object moves closer to the lens,
The size of the image increases. The image is real and inverted except in the case when the object is very close to the lens. In such cases, the image is virtual, erect, and magnified. इसका अंदर कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? दो फिनोमिना है. एज द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द लेंस द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस, और दूसरा द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट, सारे पोजीशंस पे नहीं, एक्सेप्ट इन द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस. और इसमें क्या होता है? वर्चुअल हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है और मैग्नीफाइड हो जाता है. ठीक है, ठीक. ये Yes, कॉन्वेक्स लेंस में होता है. ये सारी चीजें किस में होती हैं? from कॉन्वेक्स convex lens. लेंस में. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. Yes, ma'am. Image formation in a concave lens. A concave lens is called a diverging lens as in this lens the light rays diverge, that is, appear to come from a point after refraction. Now let us explore image formation in case of a concave lens through an activity. एक्टिविटी कोर्स में नहीं है. अगेन, एक्टिविटी इज नॉट कोर्स इन योर कोर्स बट द रिजल्ट्स आर इन योर कोर्स. यस और नो? Yes, ma'am. ओके. After completing the activity, you may observe that the image cannot be taken on the screen. The image at all positions of the object is virtual. Hence, it can be concluded that a concave lens forms a virtual, erect, and diminished image. Can you draw a similarity between the images of a convex mirror अच्छा, and a एक concave बता mirror? रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुन लो. ये जो हम लोग ने रिजल्ट्स पढ़े हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस के अंडरलाइन कर लो, और इसका जो कॉन्केव लेंस का अंडरलाइन कर लो. कैसा इमेज फॉर्म होता है और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अंडरलाइन कर ली? मेरी बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ताकि एग्जाम आपको याद करने में आसानी हो. मिल गया? और डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस की मैंने डायग्राम्स दिखा दिया आपको, कौन से प्रैक्टिस करने हैं. यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ओके, आगे पढ़ो. Differences between concave and convex lens. How can we differentiate between concave and convex lens? Following are the differences between convex and convex lens. Concave lens. It is thin at the center and thick at the sides. Convex lens. It is thick at the center and tapering at the sides. Concave lens. It diverges the light rays. Convex lens. It converges the light rays. Concave lens. It forms a virtual and erect image at all object positions. And convex lens. It mostly forms real and inverted images. ठीक है, ठीक है ना? मेरी बात हो गया? इसमें आप कर लोगे? ओके. अद्विका रीड नाउ. Yes, ma'am. Uses of lenses. Lenses are used in our daily life for various purposes. Uses of convex lenses. They are used in binoculars, Binoculars. binoculars, binoculars, telescopes, cameras to view far off objects. They are used in microscopes to get enlarged views of tiny organisms. They are used in spectacles by people who cannot see distant objects. They are used as magnifying glasses to magnify images. Use of concave lenses. They are used in spectacles for people who cannot see objects that are near. Dispersion. Have you observed a rainbow? There are 7 colors in the rainbow: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. They are known in short as vibroy. This Vibgyor. 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 Read Vibgyor. it. Vibgyor. This is to say that sunlight is made up of these 7 colors. This can be demonstrated by the following activities. Read the activity. Let's try this activity to demonstrate that sunlight is made up of 7 colors. Materials required: a glass prism, a cardboard with a narrow slit, a screen or white paper. Method: this experiment needs to be done in a dark room so that the colors can be observed sharply. Also, the room should be accessible to a narrow beam of sunlight. Place the prism on a table and the white paper screen on the opposite side of one of the faces of the prism. Now let the light pass through the slit of the cardboard so that it emerges as a fine beam and falls on the prism. The light coming out of the prism falls on
on the white sheet and a pattern of color is observed. This band of colors produced when sunlight is passed through a prism is called a spectrum. स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन मिल गई? Yes, ma'am. स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन मिल गई सबको? ओके, Yes. सेकंड वाला ट्राई दिस करो. Let's try this. Materials required: a circular cardboard disc fixed on a pinwheel. Method: divide the circular cardboard disc into 7 segments. Color each segment in the following order as shown in the figure: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This disc is now known as Newton disc. Now ठीक, spin the व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूटन डिस्क? समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूटन डिस्क, लिख पाओगे? Yes, ma'am. ओके, फिर Now spin the Newton disc at a high speed. What do you observe? Which color and colors are visible? this I have shown you na with the help of a video. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. गुड टू नो पे आ जाओ फिर. Good to know. The color of sunlight as seen on Earth's surface during the day seems to be yellow. In reality, sunlight is white, mixture of the 7 colors in the rainbow. When astronomers see the sun from outer space or from high altitude aeroplanes, they find it to be completely white. People living on the earth see the yellowish in sunlight due to the atmosphere scattering only some light. It is observed that when the cardboard disc is rotated fast, it appears white in color instead of the 7 colors. This proves that white light sunlight is actually made up of 7 colors. This phenomenon of splitting a white light into 7 colors is called dispersion. Underline it. I have made you underline these lines na. Yes, ma'am. Okay. A prism can split white light into 7 constitute colors. In nature, raindrops Constituent. Constituent. constituent colors. In nature, raindrops act as tiny prisms, splitting, refracting the sunlight. In the process, they create beautiful rainbows. That is why rainbows form usually after a shower of rain. When the sun comes out. In most cases, we are not able to see all 7 colors in a rainbow clearly. In reality, a rainbow forms a continuous spectrum of millions of colors. Our imperfect eyes can possible on can possibly only ma'am, what is this? Discern. Discern Discern. about discern about 6 or 7 distinct colors. You might have observed that sometimes drops of oil on the road also produce this phenomena when light falls on them. Similarly, we can see multiple color patterns in soap bubbles. These are all due to the dispersion of light. अच्छा, ईशा. ईशा, can you hear me? Yes, ma'am. ओके. ईशा, आप एक काम करो, सारे डेफिनेशंस जो दिए गए हैं एक लाइन में लेट्स रिवाइज में एक बार रीड कर दो ताकि पक्का हो जाए, कोई टॉपिक हम लोग छूटा तो नहीं हम लोग से. ठीक है? Yes, ma'am. ओके. Let's revise. Light travels in a straight line. Second, reflection is the phenomena of light in which light changes its direction and bounces back in the same medium. Third, mirrors are reflecting surfaces. Fourth, real images can be taken on a screen, whereas virtual images cannot be obtained on the screen. Fifth, plane mirrors always produce virtual, erect, laterally inverted, and same-sized images. Sixth, spherical mirrors are of 2 types, concave and convex. Seventh, a concave mirror produces a real, inverted image except when the object is very near. 8. A convex mirror always produces a virtual erect image. 7th, 8. Due to refraction, light travels from one medium to another. 9th, lenses or prisms are refracting surfaces. 10th, a Refracting. convex. Lenses and prisms are refracting surfaces. Yes, ma'am. Lenses and prisms are refracting surfaces. 10th, a convex lens produces a real inverted image. 11th, a concave lens always produces a virtual erect image. 12th,
Dispersion is the phenomena of splitting white light into its 7 constituent colors. ठीक है, कुछ ऐसा चीज जो रह गया है हम लोग का, मुझे समझाना या तुम्हें समझ में नहीं आया, पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल बी एंडिंग दिस चैप्टर आल्सो। बोलो। then we will be left with last only wind currents and wind, उसकी रीडिंग रह जाएगी। Yes, ma'am. Ma'am, no कुछ रह गया? problem, ma'am. No problem. Should we start with wind today or we wait for next class? बोलो जैसा, should we start with the wind or wait for next class? Now we can start. Okay, then open page 157. Open page 157. Who will read? Who will read? Ma'am, may I read? May I? Okay. Okay, may I read? जिसने पहले कहा था वो रीड करे। क्या नाम है? Ma'am, Isha. ईशा। ओके, ईशा के सिवा कोई और रीड करेगा? एक बार तभी पूछ ले। ईशा, प्रतीक और उसके सिवा, अद्विका के सिवा कोई और रीड करना चाहता है? बता दो, फिर नहीं तो कहो कि मैम चांस नहीं देती हैं। जल्दी से बोलो। मैम मे आई? ओके, रीड देन, रीड इट, रीड। मैम वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। कहाँ से होगा? यू मे हैव रेड से स्टार्ट होगा ना। पेज 157 मेरे में है, तुम्हारे में कितना है पेज? मिला? यस मैम, यस मैम। और You may have read and heard about the cyclones Hudhud, which struck India in the recent past. Hudhud, which struck India in the recent past. It caused extensive damage to life and property in eastern and southern India and Nepal during October 2014. Hudhud originated in the Andaman Sea and on October 6 and intensified and intensified into a cyclone storm on October 8. It was classified as a cyclonic. Cyclonic. No, ma'am, what the word before it? Severe type. Cyclonic. Cyclonic storm in the next few days. It hit Visakhapatnam, Andhra Pradesh on October 12th with wind speed of 175 km per hour. Hudhud caused extensive damage to the city of Visakhapatnam and the neighboring districts of Vizianagaram and Vizianagaram and Srikakulam. Damages were estimated to be the tune of 21,908 crore rupees and at least 124 deaths were confirmed. In this chapter, we will study about winds, how they are caused, and about natural calamities associated with the high-speed wind, cyclones, tornadoes, and thunderstorms. Okay, from the next class, okay, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में? क्या क्या डिस्कस करेंगे जरा काउंट करो। एक करेंगे एयर प्रेशर, फिर एयर प्रेशर एंड विंड, स्पीड ऑफ विंड विद ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, इतना हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, विद दिस एक्टिविटी। ठीक है, यस और नो? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, और ma'am. मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अच्छे से, अच्छा एक बार क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करवा लें ताकि कोई Yes, किसी ने ma'am. गलत उतार। हाँ, Yes, ma'am. Ma'am, Yes, after chapter reading, we can do question answers reading. क्वेश्चन आंसर्स की मैं भी अपने पास अपने सामने पीडीएफ खोल लूंगी, आप लोग भी अपना पीडीएफ या जहां पे भी आपने लिखा है खोल लीजिएगा, एक तरह से करेक्शन हो जाएगा। राइट?
एक तरीके से Yes, ma'am. करेक्शन हो जाएगा, कुछ गलत तो लिखा नहीं है, या कुछ अगर गलत लिखा है तो उसमें सही कर लोगे। ओके, सो आई एम एंडिंग माय क्लास।